It's here we trust and hope in our newly elected student council. Every student who obtains a leadership role or badge will feel very proud. Let me tell you that every leader present here is unique, as they shoulder a big responsibility in various capacities. For the smooth functioning of our school, they are nominated for their role, embodying the essence of teamwork and trust. With a meticulous approach, the student council takes shape. Every child here present is a bundle of talent and commitment. Moving ahead with the program, now we will have badge distribution to the elected representative of our student council members. And to do the honor, may I request our chief guest, Dr. Malvika Malik, Principal of PMC Kendriya Vidyalaya Army area, to assign the badges to the school captain boy and school captain girl. School captain boy Anurag from 12C and school captain girl Shruti from 12B. I request you to march towards the stage. School captain boys. Once again, I request school captain boy Anurag from 12th C, school captain girl Shruti from 12th B, and from the primary section head boy Pradnesh of class 5th C and head girl Tanishka from class 5th B. May I also request ma'am to give school flag to the school captain as a symbol of discharge. Now I request the school vice captain boy Anshuman from 11th C and school vice captain girls Arshia from 11th B to proceed towards the stage. Charges contributes to the enhancement of the cultural productivity of our Vidyalaya in various programs, and they will be doing this throughout the next academic session. Boy Rishikesh from 11th A and Nidhi from 11th B are our school CCA captains. Have discipline in charges. We proceed to acknowledge the discipline in charges of a school. They will ensure that our school reaches its utmost potential. Discipline captains of a school are Rajit from 11th C and Kashika from 11th A.
captains foster an optimistic attitude and enhances individual productivity in the Vidyalaya. Discipline captains are Rachit. Okay, sorry. Sports captain. Now next are the sports captain Anirudh from 11th A and Sahadri from 11th D. Next are the school cleanliness captain. The next in charges are cleanliness in charges. They are bearing the duty of upholding the school hygiene standards and will closely cooperate with the cleanliness in charges to ensure a spotless and healthy and hygienic school environment. The cleanliness school captains are Harsh from 11C and Aradhana from 12th B. प्यारे बच्चों, आज का अलंकरण समारोह योग्यता का उत्सव है और केंद्रीय विद्यालय के छात्र जो हैं उनमें भरपूर योग्यता रहती है। उन सभी को एक सा अवसर देने के लिए छात्र छात्राओं के समूह को 4 वर्ग में विभाजित किया जाता है या 4 सदन में विभाजित किया जाता है। ये है शिवाजी हाउस, टैगोर हाउस, अशोका हाउस एंड रमन हाउस। आपको पता ही है शिवाजी महाराज हमारे 17वीं शताब्दी के मराठा राजा थे। टैगोर जी जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान भी लिखा है और ग्रेट साइंटिस्ट श्री सीवी रमन एंड अ पावरफुल एम्परर ऑफ मौर्य डायनेस्टी अशोका, इन सभी के नामों पर ये सदन रखे गए हैं। द सिलेक्शन ऑफ दीज एमिनेंट हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक पर्सनैलिटीज एज हाउस नेम आर इंटेंट टू इंस्पायर स्टूडेंट्स इन केंद्रीय विद्यालयस and foster a sense of pride in India's rich cultural heritage and intellectual achievements. Now I invite Shivaji House Masters of Secondary Section and Primary Section, Mrs. Preeti Singh from Secondary and Mr. Mayur from Primary, along with the contingent of Shivaji House to come and march towards the stage to collect. I request Mrs. Preeti Singh also to come towards the stage. Come. Thank you. Kasturi from 12th B and Sarthak from 11th A are the house captain of Shivaji House. Have the Tagore House. The house master from the secondary section is Mrs. Kiran Dwivedi ma'am, and from the primary Mr. Gangadhar sir, and along with the house captain girl and boy Pallavi from 12th B and Aryan from 12th C. Please come towards the stage.
I also request Mr. Sonavane sir to come and grace the occasion. Mr. Sonavane sir. Next is Ashoka House. The house master is Mr. Ajay Bagga from secondary section, and from the primary section Mr. Balaji sir. And the house captains are Srushti from 12C and Aryan N from 12C again. Please proceed towards the stage. Mr. Ajay Bagga sir. Then House Associate of Ashoka House can come, whoever is present here, please. Ashoka House Associate. Shot. Next in the line is Raman House. The secondary house master is Mrs. Sandhya Kumari. And from the primary, we have Mr. Yudhvir as house masters. And house captains are Pallavi from 12th B and Vishesh from 12th A. Next ceremony is oath taking. Oath taking ceremony that awaits us embodies the essence of responsibility, integrity, and dedication. Our student leaders with unwavering commitment will pledge to uphold the values and principles that a school has. This solemn act not only marks the transfer of authority but also signifies the promise to lead by example and inspire positive changes within our school. May I request School Captain Girls Shruti to lead the way and take the pledge along with the house captains. Shruti. सभी कैप्टन्स आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़। Pledge position. This is my school. And I feel proud to be part of it. It is my ardent to keep the banner of my school. My responsibility include paying respect to my teachers, junior, Discriminate between right and wrong. maintain Decorative cleanliness within the school campus. school campus. I abide by rules and regulations of the school of which I am an integral part. Jai Hind. What a profound moment. As they embark on a journey of service and leadership upholding the values and principles of our school. Next, I invite Karidal.
Karyadal, these are the individuals holding paramount importance as they serve as a gesture of gratitude and appreciation towards whatever will happen in our Vidyalaya, and they will ensure the success of those events. Ladies and gentlemen, our dedicated team of Karyadal members will now be marching towards the stage with honor and pride. Karyadal comes here. कार्यदल आगे बढ़ेगा, आगे बढ़। Now I request Shivaji House contingent along with the house masters to come near the stage. Together, all of you have to come together along with your house master. I repeat the name of the house masters. From the secondary we have Mrs. Preeti Singh, and from the primary section we have Mr. Mayur. Okay, all the associates are also requested to come. All the associates of May I once again request all the house associates of Shivaji House to come towards the stage for the photograph, please. Now I request house masters of Tagore House, Mrs. Kiran Dwivedi and Mr. Gangadhar sir, along with us contingent, please come towards the stage together with the house associates also. House associates of Tagore House are requested to come at the stage. Take it off. Mrs. Anubhuti and Mrs. Meenu, please come on the stage.
associates are also requested to come along with the contingent. House associates, please come. Next is Ashoka House, so comes and stand near the contingent. Once again request all the house associates to come with the contingent. Next we have Ashoka House. The house master from the secondary section is Mr. Ajay Bagga, and from the primary we have Mr. Balaji and Srishti and Aryan. Please march towards the stage. I request once again all the house associates of Ashoka House to come on the stage to be with their house at this moment. At this proud moment, I request once again all the house associates also to come on the stage with their Ashoka House. Last but not the least, we have Raman House. The house master from the secondary section is Mrs. Sandhya Kumari, and from the primary we have Mr. Yudhveer. All the house associates are also requested to come along with the contingent. I request Parini Kumari from 5th D, also Prithviraj from 5th C, and Pallavi from 12th B and Vishesh from 12th A to march towards the stage. Now I request the whole student council along with the school captains, boy and girl, please come and march towards the stage. School captain Shruti and Anurag, take with you the whole student council and march towards the stage.
Now I request Shruti, the school girl captain, to express her feelings at this proud moment. I request our guest of today, along with the principal and vice principal sir, HM ma'am and Sonamni sir, to please be seated. Firstly, I would like to welcome you all to this special ceremony we have here today. It's our honor to be here today and we all are truly grateful for what we achieved. Leadership, leadership, leadership. What is leadership? It is about keeping the goal of society before the goal of an individual. It is about having the vision to achieve the target. It is about understanding the followers and working with them. It is related to active listening and adapting to changes. It is linked to commitment, determination, teamwork, loyalty, and earning respect. Leadership follows the golden rules. Listen more, speak less. Know yourself. Always embrace the truth and live life by a higher code. A very warm and pleasant morning to all present over here. My name is Shruti Gavis from class 12B. Today I stand here as the school captain girl of Kendriya Vidyalaya Army area. It is a privilege to have this honor. Being a leader isn't just about being an outspoken character that gets noticed. It's about all other little qualities. Words like hardworking, dedicated, persistent, and enthusiastic spring into mind. These are all extremely important in becoming a good leader. As a school captain, I will strive to guide every single of the students into this place to success. Continuing to set a good example to you all. I promise to work hard to be the effective leader that you will be proud of in this school. I will try to uphold and obey all the rules and regulations and become the role model that you can look up to. I will assist teachers and students in any way possible to the best of my abilities. Last but not the least, I would like to thank each and every one of you to give this opportunity to me and encouraging me. Thank you. I promise that I will let the banner of my school high. Wishing you all a great day ahead. Thank you. Well spoken, Shruti. And I repeat, miles to go before I sleep and many promises to keep. Now we all are eager to hear the words of wisdom and inspiration from our Vice Principal, Mr. Arun Kumar Sir, whose experiences and insights shall undoubtedly ignite the spirit of our students who are here as a member and having the various responsibilities. I request Mr. Arun Kumar, Vice Principal of Amar Vidyalaya. Thank you, ma'am. प्यारे बच्चों, आपकी हलचल समझ में आ रही है, लेकिन ये हमारे विद्यालय का विशेष कार्यक्रम है और जो क्लास 6 के जो बच्चे हैं वो ये जरूर सीखें कि छात्र परिषद क्या होती है। आप शोर करना रोज सीख रहे हैं,
छात्र परिषद और उसका अलंकरण समारोह रोज नहीं होता है। आपके लिए एक नया अनुभव है। परम आदरणीय प्राचार्य महोदया, HMM और नवनियुक्त प्राचार्य साथी अशोक सोनावणे जी, शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद की कविता की दो पंक्तियां हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। जिनको समझ नहीं आएगा वो वाह वाह करेंगे, क्योंकि कविता और गजल के शेरों के बीच का अंतर समझ पाना इतना आसान भी नहीं है। यहां मैं एक लाइन में सोनावणे जी के संघर्ष को बताना चाहता हूं कि तमाम जगह साक्षात्कार इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरने के बाद EMRS ने उनको एक सुखद जिम्मेदारी दी है। वो सर्वथा योग्य हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। मेरी उनकी मुलाकात भले ही पिछले 8 से 9 महीने की रही, लेकिन जो हमारा फ्रेंड सर्किल था वो कॉमन रहा। तो जिन शिक्षकों को मैं जानता था, सर पहले उनके साथ काम कर चुके थे, तो मुझे मालूम था कि उनकी स्ट्रेंथ क्या थी। और अगर मैं पिछले सालों के परीक्षा परिणाम, विशेषकर अंग्रेजी विभाग के अगर मैं देखता हूं, तो वाकई वो परिणाम अद्भुत मिलते थे। हालांकि मैंने कई बार उनको कहा भी कि आप क्लास के बाहर रहकर कैसे अच्छा परिणाम दे जाते हैं। तो ये मेरे लिए भी सीखने की बात थी कि जहां हम स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट लर्निंग की ओर नहीं लेकर के जाते हैं, वो लेकर जाते थे। और मुझे पूरा यकीन है कि वो नई जिम्मेदारी को इसी शिद्दत के साथ निभाएंगे और एकलव्य आदर्श विद्यालय पालघर देश के श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक होगा, ये मेरी शुभकामना है। प्यारे बच्चों, में छात्र परिषद की बात करूं तो आज इसका अलंकरण समारोह हुआ है, यानी कि आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी हमारे पूरे विद्यालय की है। आज आप देख रहे हैं कि लगभग 30% स्टूडेंट काउंसिल में चुने गए हैं। तो पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आप स्वयं अनुशासन में रहें। दूसरी जिम्मेदारी यह है कि आपके मार्फत विद्यालय में अनुशासन बने रहना चाहिए। आज ये जो बैजेस दिए गए हैं, इसका तात्पर्य सिर्फ इतना नहीं है कि आप आए और आपने अपने सीने के ऊपर एक बैज धारण किया। इसका तात्पर्य यह है कि सत्र 2024-25 के अंदर हमारा विद्यालय किस दिशा में जाएगा, छात्र शिक्षक संबंध कितने उन्नत हो सकेंगे, आप इस विद्यालय को बेहतर बनाने में कितना योगदान दे सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी आज आप लोगों के कंधों पर दी गई है। आप देखिए, हमारे हाउसेस के जो 4 नाम हैं, सदन, शिवाजी वीरता का प्रतीक है, टैगोर साहित्य का नोबेल भारत के अंदर केवल एकमात्र आया है गीतांजलि के ऊपर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है। तो यहां आप देखेंगे कि वीरता और साहित्य दोनों का मिलन है। और अगर इधर हम देखें, अशोका हाउस, सम्राट अशोक का जो शासनकाल है उसको सबसे महान माना जाता है, इसलिए उनके नाम के पीछे अशोक महान लिखा जाता है। और उस महानता का कारण यह था कि उनके शासनकाल में चहुं और उन्नति थी। और रमन, सीवी रमन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये जो नाम है, ये नाम ही
स्टूडेंट काउंसिल क्या है इसको बताते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय के बच्चे सर्वांगीण विकास उनका विद्यालय में होता है, ऐसे हम चाहते हैं कि आप समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करें, आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। छात्र परिषद के कंधों पर यह जिम्मेदारी है और मैं समझता हूं कि सभी शिक्षक साथियों के सहयोग से आप इस जिम्मेदारी को पूर्णतः निर्वहन करेंगे। पुनः मैं सीसीए और छात्र परिषद को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इस वर्ष की गतिविधियों में आपका स्थान अद्वितीय हो, अनुपम हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निसंदेह आपके दिए गए जो यहाँ पे आशीर्वचन है और आपके दिए गए जो यहाँ पे गाइडेंस के शब्द हैं वो उनके दिलों में, इनके मस्तिष्क में गुंजायमान रहेंगे और आप सब अपने वायदों पे खरे उतरे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और अब एक दो नाम जिनके बिना ये मार्च पास्ट अधूरा सा था, शार्दुल और दक्ष, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। वो यहाँ पे ताशा और ड्रम बजा रहे हैं, एक जोरदार ताली इन लोगों के लिए भी होनी चाहिए। Now, may I request our Honorable Principal and the Chief Guest of this ceremony, Dr. Malavika Malik, whose illustrious presence exemplifies the spirit of leadership. Please, ma'am, may you grace all of us with your word of guidance, blessings, and encouragement to our newly elected student council members and all of us who are present here. Please, ma'am. एक साथ बोलेंगे। गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है बारिश चाह नहीं रही है कि मैं आपसे ज्यादा बातें करूं। एकदम शॉर्ट में स्टूडेंट काउंसिल के बच्चों को सबसे पहले तो शुभकामनाएं दूंगी और साथ ही साथ यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आपके ऊपर हमने बहुत सारी जिम्मेदारी दी है। आपको जो हमने फ्लैग दिया है, आपको जो बैजेस दिए हैं, उसके साथ हमने विद्यालय की बहुत सी जिम्मेदारियां दी हैं। आप सब एक्चुअल में हमारी मतलब मेरी और आपके शिक्षकों की जिम्मेदारियां बांटने के लिए चुने गए हैं। जो भी हमारे लीडर्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स, उनको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, लीडर्स ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल, सो सेट अ एग्जाम्पल सो दैट अदर्स कैन फॉलो। ठीक है, बारिश है, स्टूडेंट काउंसिल के बच्चों से साल भर बात करते रहूंगी मैं। कार्यदल के बच्चे, हर एक क्लास में से जो 2 बच्चे कार्यदल के चुने गए